Okay, so our new topic is kinetics. This is chapter number 2 that we are going to start, reaction kinetics, right? So what is kinetics, बच्चों? What is kinetics? ये kinetics क्या होता है? Yes, over here, this is reaction kinetics. What is kinetics? Actually, kinetics का मतलब क्या है बच्चों? Kinetics is the rate of reactions. It is actually the study of the rate of reactions. You all learn this in O levels, the very journal pattern of the rate of reactions and the very journal informations about the rate of reaction. Then you are going to move towards AS. Then you learn a few more things about rate of reaction over there, like Maxwell-Boltzmann curve, such things, and factor again. And now you are in A2, so you are going to learn the remaining part of this chapter, which is reaction kinetics over here. And we are going to start this topic with the study of rate of reaction. So whenever you talk about the rate of reaction, whenever you are going to find out the rate of reaction, whenever you're going to find out the speed of the reactions, either the reaction is fast or slow, whenever you are going to draw the graphs for the reactions rate, and whenever you are talking about the instrument, apparatus, everything related to the rate of reaction, it is actually the part of kinetics, right? This is actually the part of kinetics. Now let's start the rate of reaction. What is rate? Rate is actually when you are going to find out something with respect to time. So right now we are talking about chemical reactions. So definitely we are going to find out the speed, or we are going to find out the production. We are going to talk about the consumptions of reactant with respect to time. That जैसे for example आप कोई reaction कर रहे हो, तो वो reaction fast है या slow है, हमें कैसे पता चलेगा? तो उसको पता चलाने के लिए we can do this thing कि यार जो प्रोडक्ट हमारे पास बन रही है उसको हम कैलकुलेट करते रहें, उसको मेजर करते रहें विद रिस्पेक्ट टू टाइम कि कितनी देर में कितनी प्रोडक्ट बन रही है. We can find out the rate of that reaction, right? और we can do this कि उसकी अगर उसमें हमने concentration प्रोडक्ट की चेक करनी है या उसके अंदर हमने concentration reactant की हमें मालूम है, तो हम उससे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं that in how much time the concentration of reactants are going to be changed. Definitely they are going to be decreased because reactants are going to be used up. तो उनकी concentration time by time क्या होती रहेगी, decrease होती रहेगी. So you can find out the rate according to the concentration as well, or you can even find out the rate by using the concentration of product which is forming right on the product or in the reaction, right? So rate of reaction क्या होता है बच्चों? Speed of reaction क्या होती है कि आपने उस chemical reaction की speed check करनी है with respect time कि वो fast है या slow है. जैसे for example हमारे एरिया में अगर कोई नया रोड डलता है तो उस रोड को सूखने में एटलीस्ट 6 से 8 घंटे लगते हैं. तो दिस इज अ रिएक्शन व्हिच टेक्स ऑलमोस्ट 6 to 8 आवर्स. फॉर एग्जांपल अगर हमारे घरों के अंदर विंडोज हैं या हमारे घरों में अगर आयरन के बने हुए गेट्स लगे हुए हैं या विंडोज लगी हुई हैं या ग्रिल लगी हुई हैं, सो इट विल टेक टाइम टू बी रस्टेड, राइट? ऑलमोस्ट अगर आपने उसको पेंट नहीं कराया है या उसमें आपने किसी तरह की कोई भी प्रिकॉशन यूज नहीं की है, या आप अगर किसी साहिली इलाके के पास नहीं रहते हैं, आप बहुत सारे कोई रेगिस्तान में आप अगर है फॉर एग्जांपल, सो इट विल टेक टाइम ऑलमोस्ट 8 to 10 or 12 months टू बी रस्टेड. बट अगर आप कराची जैसे शहर में रहते हैं और आप बिल्कुल क्लिफ्टन के पास रहते हैं या डिफेंस के पास रहते हैं, सो योर आयरन इज गोइंग टू बी रस्टेड क्विकली बिकॉज द एनवायरनमेंट इफेक्ट, राइट? Over there near the coastal areas or the areas near the seas, so definitely the atmosphere have a lot of moisture in it, right? So it can rust the iron quickly. So ये सारे रिएक्शन है जिनका डिफरेंट टाइम पीरियड है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप सोडियम को पानी में डाल देते हो, सो वो फौरन से रिएक्ट करेगा, हाईली रिएक्टिव होता है सोडियम और फौरन से रिएक्शन करेगा, तो वो रिएक्शन फास्ट है. आयरन रस्ट हो रहा है तो उसको 8-10 महीने लग रहे हैं, ये रिएक्शन स्लो है. अगर आपके घरों में इलाकों में रोड डल रहे हैं तो उसको सूखने में 6-8 घंटे लगते हैं, ये रिएक्शन स्लो है या फास्ट है, व्हाटएवर. दिस इज एक्चुअली द रेट ऑफ रिएक्शन. ये होता है आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन. और अगर आपको इसको फाइंड आउट करना है, so you can find out it by in which time reactant is going to be consumed, or what is the change in concentration of reactant or product, or the concentration of product, or you can even find out by the measurement of product as well with respect to time. So these are the things
by which you can find out rate of reaction. And we know that rate of reaction is actually what? It is a change in concentration with respect to time. So you can find out the unit according to this as well. Concentration unit is mole per decimeter cube, right? And time is actually second. So you can write the unit for this is mole decimeter cube inverse second inverse, right? So this is the unit for the rate, right? This is the unit for the rate, right? So बच्चों, you need to remember one more thing. आपने ये पिछले क्लास में इक्विलिब्रियम के चैप्टर में पढ़ी थी कि you can define the concentration by square brackets, right? So for example, if this is written, if you find something like this written in the paper or somewhere in the book, so you need to understand this. This is actually the concentration of HCl, and if it is written like this, so you can say that this is actually the concentration of H positive ions, right? So this is the case that you need to understand. And then, we have a few more things over here, like you need to understand what is rate and concentration of reactants. What is the connection between these two things, right? So the simple connection between these two things is this: rate of reaction is actually depending on what? Frequency of collisions, right? Definitely one more thing over here on which the rate is going to be dependent is energy as well. Rate of reaction is always depend on the energy of the particles, right? And the frequency of collision as well, right? And we know this that catalyst speeds up the reaction. And you need to remember this one कि हम लोग अब तक यही सोचते हुए आए हैं कि catalyst speeds up the reaction and it is not going to be consumed. जब वो consume नहीं हो रहा तो वो reaction में take part भी नहीं कर रहा, ये हम सोचते हैं, ठीक है ना? ऐसा सोचते हैं जब तक हमें ये बात पता नहीं होती, हम ये सोच रहे होते हैं, और हो सकता है आप में से कोई ना भी सोच रहा हो इस तरह की बात को, तो that's fine. कैटलिस्ट, अब सोचें अगर हमने कैटलिस्ट डाला है वो रिएक्शन में और उसने रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं किया है, वो एज इट इज वापस हमें मिल गया, विथड्रॉ हो गया है, तो हमने डाला क्यों? और अगर उसने काम नहीं किया और उसने अगर किसी के साथ कुछ इंटरेक्शन उसका नहीं हुआ तो उसने रेट ऑफ रिएक्शन को पास कैसे कर दिया? So this is the thing you need to understand, बच्चों, that catalyst is always going to take part in the reaction. Catalyst is going to make some intermediates over there in the reaction, but definitely it is not going to be consumed, right? आपने जितना डाला था उतना विथड्रॉ हो गया, that's fine. But ऐसी बात बिल्कुल नहीं है कि वो वहां पर उसने कुछ किया ही नहीं, आपने डाला था ब्लॉक और एज इट इज ब्लॉक बाहर आ गया, ऐसा नहीं, ठीक है ना? आपने जो वहां पर कैटलिस्ट डाला होता है किसी भी रिएक्शन में, तो कैटलिस्ट वहां पर काम करता है. जैसे फॉर एग्जांपल आहत के पास एक पाउच है और आहत वो पाउच ट्रांसफर करना चाहता है अलिशवा को, ठीक है ना? और बीच में खड़ा हूं मैं, तो आई जस्ट टेक द पाउच फ्रॉम आहत एंड आई जस्ट move it towards Alishba, right? So this is the connection, this is the work of catalyst. वो करता क्या है? It just provide an alternate path. वो बोलता है कि रिएक्शन इस तरफ से होता हुआ गुजरेगा तो आसानी से हो जाएगा, अगर आप डायरेक्ट करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा. आहद रहते हैं कराची में ब्लॉक 6 में और अलिशबा रहती है मेरे ख्याल से मुल्तान में या इस्लामाबाद में कहीं, तो इट इज very difficult for Ahad to transfer the pouch to the Alishba, but it is easier for me. I can provide an alternate path to provide that pouch to the Alishba, right? So this is what the catalyst mean. Catalyst करता क्या है? खर्च नहीं होता, मुझे कुछ नहीं हुआ, मेरे अभी भी दो हाथ के हाथ वही हैं, मेरे हाथ से कुछ गया भी नहीं, मेरे हाथ से सिर्फ पाउच गया, वो मेरा नहीं था, वो हाथ का था, मैं खर्च नहीं हुआ, मेरी कोई एनर्जी ज्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं लगी, ठीक है ना? मैं जितना था मैं उतना ही हूँ. आज भी मैं टीचर ही हूँ, जब पाउच देने से पहले भी मैं टीचर था, पाउच देने के बाद भी मैं टीचर हूँ, मेरा कोई रुतबा घटन नहीं किया पाउच देने से. आई एम स्टिल ओवर देयर जहाँ मैं था, राइट? बट हुआ क्या? हुआ सिर्फ ये कि मैंने एक अल्टरनेट और इजी पाथ शो कर दिया जिसके थ्रू वो पाउच पहुंच सकता था. तो सेम वर्क इज ऑफ कैटलिस्ट. कैटलिस्ट क्या करता है? एक अल्टरनेट पाथ दे देता है, ठीक है ना? खुद खर्च नहीं होता, बट उस रिएक्शन को फास्ट करा देता है, जल्दी करा देता है. इसका मतलब है इट इज गोइंग टू टेक पार्ट इन द रिएक्शन. मैं इस प्रोसेस में था बीच में, बट मैं खर्च हुआ नहीं, ठीक है ना? तो कैटलिस्ट रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं बट खर्च नहीं होते. दिस इज द थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट कैटलिस्ट बच्चों, ठीक है बच्चों? So what is the connection of the concentration of reactants with the rate? So you need to remember this. For this you need to find out initial rate at least, right? And what is initial rate? It is the rate when the reaction is going to be start, right? Gradient, you can use the word gradient as well for the rate, right? So actually when you talk about the rate of reaction, so for example I just use this process. I just take a conical flask, right? And I'm having a reaction over here, right? And a gas is producing over here, and I just take
this gas to the gas cylinder, for example. Right, and we know that gas range is actually what? Graduated, so it can measure the volume of gas, right? For example, I have HCl over here, right? And I'm adding few blocks or few chips of calcium carbonate over here, right? So we know that there is a reaction of HCl with calcium carbonate, and it will form what? So calcium chloride, carbon dioxide, and water. Definitely, water and calcium chloride will be in the solution, but the gas will evaporate from here, and there is no space. It is closed, right? There's a cork over here. It is closed. There is no space for the gas to escape. Definitely, it is going to move through the delivery tube. So it will move through the delivery tube and going to collect in the gas range with respect to time. And I have what? I have a stopwatch by which I can calculate the time as well, right? So by stopwatch, I just calculate the time and I just draw a graph over here. For example, in the 0 time, I have 0 volume of gas, right? But when the time increases, the amount of volume of the gas increases. When the time increases, the volume of gas increases, right? When the time increases, the volume of gas increases, time increases, volume of gas increases, time increases, volume of gas increases. And at this point, when the graph is going to be, you can say that horizontal, or it is going to be straight, this time is actually showing you that the reaction is over at this time. And this is the maximum volume of the gas which is going to be produced over here, whatever the volume. For example, it is 70 centimeter cube. So this is the final volume. When the reaction is going to be stopped, the total volume of the gas which is produced over here is 70. And this is the time. Whatever the time over here, for example, this is 5 minutes. So this reaction takes 5 minutes to complete. So I just draw a graph over here, and I still not understand what is the initial rate right now, because initially you don't have reaction. So you can not find out the rate of reaction initially. So it will take a little time to find out the rate of reaction. So at least 1 or 2 second reaction must be there, so we can find out the initial rate. So that is why in just no time you can find out the rate of reaction. For example, in just 5 seconds, starting 5 seconds जो थे उसमें मैंने रेट निकाल लिया, तो ऑलमोस्ट टाइम इक्वल टू 0 था, तो मैंने उसको निकाल लिया, उससे पहले नहीं निकाल सकता था. तो मैंने यहाँ पर एक बच्चों क्या लगाया, एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है ना. दिस इज द टेंजेंट व्हाट आई ड्रॉ ओवर हियर. तो द फाइनल पॉइंट और द इनिशियल पॉइंट में मैंने डिफरेंस निकाला, और इससे मैं क्या निकाल सकता हूँ बच्चों, ग्रेडियंट निकाल सकता हूँ. एंड व्हाट इज ग्रेडियंट? इट इज in this reaction actually the rate of reaction, right? So this is the initial rate or the initial rate of reaction जो कि just start में था, ठीक है ना. initially जो कि मुझे मुश्किल हो रही थी निकालने में, जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने थोड़े से टाइम का रेट निकाल लिया, which I am using as an initial rate, right बच्चों? Is that clear? Yes, sir. Now this graph is actually the volume of gas, right? And the volume of gas is one of the products. So this is actually product versus time graph, right? This is actually product versus time graph, bacho, right? And right now over here we are talking about the concentration of reactant versus rate, right? So change of concentration with respect to time is called actually rate, and initial rate is the rate of reaction at just the reaction is going to start. The time is approximately 0. We did this, right? Initially the rate of consumption of a reactant is maximum. You need to understand this thing that, for example, if we are going to initiate 2 reactants in the reaction, right? For example, I just take 5 mole per decimeter cube of HCl, right? And I'm just adding 50 grams of calcium carbonate over there. So initially we have a lot of reactants over there. So there is a connection between the particles. There is an attraction between the particles. There is a collision between the particles, and there are a lot of particles. So there are more possibilities to interaction over there between the particles. ना collision initially बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि reactant ज़्यादा है. तो initially जब reactant ज़्यादा है तो collision ज़्यादा है, तो definitely rate भी ज़्यादा होगा. और ज़्यादा जब reactant है तो ज़्यादा reactant consume हो रहा होगा क्योंकि वहाँ और कुछ है ही नहीं, सिर्फ reactant है. फिर आहिस्ता reactant कम होता जाएगा और product का amount बढ़ता जाएगा. So you need to understand this. The first initial reaction is the highest rate of consumption of reactant. This is
actually highest consumption of reactants, you can say that the rate of consumption of reactants, the rate of consumption of reactant, right? Yeah, reactants की concentration, right, is highest in the start, is highest in the start, right, बच्चों? Is that clear? Yes, sir. And then if you talk about this one, so this is actually the reactants concentration versus time graph. This is actually the graph which is connected with the concentration of reactants versus time. So you can see this time by time, the concentration of reactant is decreasing with time. So you can see this. If you talk about this time, so at 50 seconds, the concentration of the reactant initially somewhere 0.45. But if you focus on the 100 seconds, so you can see this, it is almost 0.33 somewhere. Then in 150 seconds, you will find it is something 0.25. In 200 seconds, you will find it almost 0.99, 199. And in 250, you can see this, it is 1.5, 0.15 somewhere. And in last is in 300, you can see this, it is 0.1. And then it is decreasing further. And after that, it is going to be constant when the reaction is going to be finished, right? So you can see this, जैसे जैसे reaction होता जाएगा वैसे वैसे reactant consume होते जाएंगे, जैसे जैसे reactants consume होते जाएंगे उनकी concentration कम होती जाएगी. Is that right, बच्चों? Yes, sir. और जब इनिशियली आपके पास ज्यादा रिएक्टेंट्स होंगे तो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट्स भी ज्यादा होगा और रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट भी ज्यादा होगा, क्योंकि जब ज्यादा कोलिजन होगा तो प्रोडक्ट ज्यादा बन रही होगी, और जब कोलिजन ही नहीं हो रहा होगा, जब ऐसा ऐसा कोलिजन ही कम होता जाएगा तो प्रोडक्ट भी कम बन रही होगी और रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट्स भी कम हो चुके होंगे. एंड वी हैव few factors, if you remember in your AS or in your O levels, we have a few factors that can affect the rate of reaction, बच्चों. And the very first was what? It is the concentration of reactants. If you increase the concentration of reactants, the rate is going to be increased, if you remember that, right? If you talk about the particle size, or I just need to use the surface area over here. If you increase the surface area, so definitely the rate of reaction is going to be increased. If you talk about pressure of, and the pressure is always for gases only, if you increase the pressure, the particles of the gases come closer to each other, so the rate of reaction increases. And we have two more factors. If you increase the temperature, so the rate of reaction increases, or if you use catalyst, so definitely the rate of reaction increases. Is that bacho right? I think you all remember these 5 points or these 5 factors, or no? Yes, sir. Yeah. Oh, that's very good. So what is the difference between these 3 and these 2? What is the difference over here? And the difference is actually, this is actually, these 3 are actually increasing what? These 3 are actually increasing frequency of collision. These 3 always increasing the frequency of collision, right? अगर आप इन 3 की बात करो बच्चों, so they are going to increase the frequency of collision, and अगर आप इन 2 की बात करो, so they are concerned with the energy of the particles, right? So for example, if you are increasing the reactants, if you are increasing the concentration of reactants, definitely there are more particles over there. When the particles are more, definitely the interaction and the collision between the particles are going to be increased. And right now, this is actually increment in the concentration of limited reactant, right? Remember this. If you are increasing the excess reactant, there is no overall effect on the rate, right? Maybe initially the rate of reaction will be faster because of the greater number of particles, but at the end there is no more product going to be formed. So you need to increase the number of particles of limiting reactant. So if you are increasing the reactant which is limited, so definitely the collision will be more and also the product will be more, right, bacho? And if you only increase the concentration of the reactant which is already in excess, so definitely it increase the amount of particles over there of excess, so definitely they will react
more, or the frequency of collision will be more, but in the end the product will remain same, right? There is no overall effect on the product. Is that right, Vacho? Yes, sir. Sir, these three concentration, surface area, and pressure increases the successive frequency of collision. Na? You can even use the successive collision, or you can even use the frequency of collision. Any two words you can use. Frequency of collision, matlab, it is about the collision of two particles, and if you use the word successive collision, that's fine. You can even use this, because right now you are talking about calcium carbonate and HCl, so we just have two reactants over there जिनके दरमियान reaction हो सकता है. So अगर ये दोनों आपस में टकराएंगे, if there is a collision between these two particles, so there should be a successive collision. इसके इन दोनों का reaction है आपस में ना. So if you want to use the word successive, so you can. Otherwise, frequency of collision भी चलेगा. ठीक है? Okay, sir. And if you talk about the surface area, but surface area is also one of the factor which increase the number of collision or the frequency of successive collision according to Sabahat. So you just look at over here. For example, you have a beaker, right? In this beaker, so you have what? You have HCl, for example. In this beaker, you have HCl, right? And I just put over here a block of iron, right? I just put a block of iron over here. So what is going to be happen over here? Definitely HCl particles are going to attack on this block and going to react with the iron and forming iron chloride and hydrogen gas. So there is an attack of HCl particles on the iron block, right? But you can see this, only the surface of iron is connected, or you can say that only the surface of iron is exposed to hydrochloric acid, which is going to react, right? And if you are going to crush this, you will find that the number of particles are going to be increase of iron, right? For example, if you have HCl in this beaker again, and you are just adding what? You are adding the powder. You are adding what? The powder iron, right? So you can see this, due to the powder iron, you can see this, the number of particles of iron and the particles which is inside the block are going to be exposed to the HCl molecules. Now HCl molecules can attack more better, right? Or it can attack, you can say that HCl molecules can attack on more number of particles of iron. So this is what? This is the extra collision over there. This is actually, there are more successful collisions. Is that right, Sabat? You can use the word successful over here. It will be more useful over here, the word successful, right? So there will be more successful collision with the HCl molecule and iron. So definitely it is going to increase the rate of reaction. Is that right or not? Yes, sir. And if you talk about the gaseous particle, we know that the gaseous particle are going to be far apart from each other. They are actually showing the diffusion. So they can move far apart from each other. Same as it is, all the particles are going to be move further apart from each other because they are showing what? Diffusion, spreading of molecule from the higher concentration to the lower concentration. So if you apply pressure on them, so they are going to be come closer to each other. When they come closer to each other, then the chances of collision and the chances of successful collision or the frequency of collision is going to be increased, than the rate of reaction increase. So these three factors are going to be affected, or you can say that you can use the rate and frequency of collision for these three factors. But if you talk about temperature, so temperature is going to affect the energy of the particle, and catalyst is also going to affect the energy of the particle. So these two factors are connected with the energy, right? So if you increase the temperature, so the number of particles are remain same over here, right? But the energy of the particle increases. So the kinetic energy of the particle increases. So their movement will be more accurate, or they are going to move with faster energy or with a faster speed. So when they start moving faster, so there are more collisions over there. For example, अगर एक क्लास है, एक क्लास के अंदर आपके पास कोई जस्ट 5 बच्चे हैं, ठीक है ना, और एक ही दरवाजा है और छुट्टी हुई स्कूल की, और बड़े तमीज के बच्चे थे माशाल्लाह सारे के सारे, और बड़े 1 by 1 उठकर सारे चले गए, ठीक है ना. So there is a good reaction. The rate of reaction is again same over here. जितना टाइम लगना था उतना टाइम लग गया और 5 के 5 बच्चे दरवाजे से बाहर चले गए, ठीक है ना. बट अगर आग लग जाए किसी स्कूल के किसी कमरे में और धुआं भरना शुरू हो जाए, तो वही 5 बच्चे
तमीज के दायरा छोड़कर वो आ जाएंगे बहुत तेज भागने पे, क्योंकि उनकी एनर्जी बढ़ चुकी होगी। वो बोलेंगे इससे पहले कि ये धुआं हम तक पहुंचे, ये आग हम तक पहुंचे और हमें जला के राख कर दे, तो इससे बेहतर ये कि हम यहाँ से भाग कर निकलें। तो हमारी एनर्जी बढ़ जाएगी। जब हमारी एनर्जी बढ़ जाएगी तो हम वहां से तेजी से निकलेंगे, तो हो सकता है कि वो 5 बच्चे आपस में टकराकर वहीं गिर जाएं, है ना। तो collision के chances हो सकते हैं। when the energy is going to be increased, then the collision chances will be increased definitely. So that is why rate of reaction is going to be increased when there is more energy. So the particles are going to be move anonymously, and they are just going to move in all directions, and they may interact with each other with more energy. Is that right, bachcho? Yes, sir. So these are the factors that you need to remember, and this is all the previous part that I'm going to show over here. This is not right now very important, but maybe somewhere you will find this, because the AS syllabus is also connected with the A2 syllabus. So in some of the questions we can ask even these things. So you need to understand this, and you also need to review the Maxwell-Boltzmann curve, right? You need to remember this one as well for paper 4 as well. It can be asked in exam for 1 mark or more than 1 mark. So you need to revise this as well, like we did in energetics. Let's talk about something different. Right now, we are talking about effects, right? Let me check. अगर कोई बच्चा extra add हो गया है तो मैं उसको add कर दूं. No one is here. Okay. Now we are moving towards, bachcho, what? We are moving towards a new thing, which is more important. It is effects of concentration of reactants on the rate of reaction, right? What is the factor? What is the effect of the concentration of reactants on the rate of reaction? Bachcho, O levels में हमने पढ़ा था कि when we increase the concentration of reactant, it actually ultimately increase the rate of reaction. We did this in O levels, and that was not wrong. That was right, because we were on ordinary level, so we understand things accordingly, right? So right now it is going to be changed over here, and the few things that you learn over here, you will think that यार ऐसा भी हो सकता है कि concentration change कर रहा हूँ मैं किसी reactant की, and there is no effect on the rate, ना तो बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है. So you need to remember this, बच्चों. कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की चेंज करने से रेट बढ़ भी सकता है और रेट को कुछ नहीं भी हो सकता है, और कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से रिएक्टेंट्स की रेट जो है 4 टाइम्स भी बढ़ सकता है. डबल किया आपने वो 4 टाइम हो गया, मतलब स्क्वायर की पावर के साथ ही बढ़ सकता है, ठीक है ना. तो ये भी आपको यहाँ पता चलने वाली है बात कि कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की चेंज करने से क्या क्या फर्क पड़ सकता है रेट ऑफ रिएक्शन पे. ओ लेवल्स में जो हमने पढ़ा था that was completely right. और वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए था बच्चों? वो उन रिएक्शंस के लिए था जो कि सिंगल स्टेप रिएक्शंस होते हैं. ऐसे रिएक्शंस जो हमने कराया ढक करके हो गया खत्म, बस उसकी बात एक ही स्टेप था. सोडियम को हमने पानी में डाला, बस वो उसी वक्त सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया, हाइड्रोजन गैस बनी, बस खत्म. और इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बना, इसमें कोई सा भी जो है ना कैटालिस्ट हमने ऐड नहीं किया, कोई भी चीज हमने ऐड नहीं की, बस सिंगल स्टेप रिएक्शन था. 2 रिएक्टेंट को मिलाया, आपस में मिल गए, अल्लाह गुल्ला, खत्म, काम खत्म, ठीक है ना. तो ऐसे रिएक्शंस जो कि सिंगल स्टेप हो, तो उनका टोटल रेट डिपेंड करता है उनके रिएक्टेंट्स पे. तो ये आपने ओ लेवल्स में पढ़ा, दैट्स फाइन, दैट्स टोटली फाइन, आई एग्री दिस, राइट. बट राइट नाउ यू आर मूविंग टुवर्ड्स समथिंग जो कि आप एडवांस लेवल पे आ गए, तो आप बहुत सारी चीजें आगे की पढ़ने वाले हैं. तो आगे की पढ़ने वाली चीजें क्या है? द रिएक्शंस आर मे बी मल्टी स्टेप्स, मतलब कि एक रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप्स पर भी जो है आपके पास डिपेंड करता है. फॉर एग्जांपल, आपने 2 रिएक्टेंट्स डाले और एक आपने कैटालिस्ट डाला, आपको एक रिएक्टेंट एक कैटालिस्ट से मिलेगा पहले, अब वो कैटालिस्ट से बनी हुई जो चीज है वो दूसरे रिएक्टेंट से मिलेगी, उसको कैटालिस्ट को बाहर कर देगी और उसके बाद आपको प्रोडक्ट मिल जाएगी. सो राइट नाउ दिस इज गोइंग टू बी चेंज. फॉर एग्जांपल, आपने रिएक्टेंट 1 को रिएक्टेंट 2 से मिलाया, ठीक है ना, आपके पास प्रोडक्ट बन गई, दैट्स ऑल. दिस इज द सिंगल स्टेप रिएक्शन. तो टोटली आपके पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है. आई एग्री दिस. बट व्हाट इज द मल्टी स्टेप्स मीन? फॉर एग्जांपल, आपने रिएक्टेंट 1 डाला, उसके साथ आपने कैटालिस्ट डाला, अब यहाँ कोई चीज बन गई, एक बीच की कोई चीज बन गई, व्हिच इज एक्चुअली इंटरमीडिएट, राइट. अब ये इंटरमीडिएट जाकर रिएक्ट करेगा किसके साथ? दूसरे वाले रिएक्टेंट के साथ, और क्या करेगा? आपको प्रोडक्ट मिल जाएगी और कैटालिस्ट को कर देगा बाहर. सो यू कैन सी दिस, कैटालिस्ट इज सेम एज इट इज, जो आपने ऐड किया था वही पूरा का पूरा विथड्रॉ हो गया, तो देयर इज नो चेंज इन कैटालिस्ट. बट आपके पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है पहले वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? इन दोनों के ऊपर, और इन दोनों में से एक जो है एक्चुअली इस पे डिपेंड कर रहा है.
So it is actually the rate of reaction. So multi step का जो rate of reaction होता है बच्चों वो डिपेंड करता है reactant 1 की concentration पे जो कि actually use हो रहा है reaction 1 में, और reactant 2 की concentration पे जो कि use हो रहा है reaction number 2 के अंदर. तो जो जो reactant आपके पास use हो रहा है दो अलग अलग reactions में, उन दोनों के reactants की concentration पे overall rate multi steps का depend करता है. Is that right बच्चों or not? सर नहीं समझ आ रहा. नहीं समझ में आया, कोई मसला नहीं है. अब ये एक रिएक्शन है, this is the reaction number 1 and this is the reaction number 2, right? Is that right? ऐसे समझ में नहीं आ रहा, हम ऐसे करते हैं. देखें फॉर एग्जांपल कार्बन एंड ऑक्सीजन ने रिएक्शन किया, कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया. ठीक है, ठीक है. यस सर. अब ये फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन 2 स्टेप्स में हुआ. पहले कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, क्या बन गया आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड. फिर इस कार्बन मोनोऑक्साइड ने दोबारा ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, क्या बना लिया कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये दिस रिएक्शन अ सिंगल स्टेप रिएक्शन इज एक्चुअली 2 स्टेप रिएक्शन. तो ये इस 2 स्टेप का सेकंड स्टेप है, ठीक है ना. ये 2 स्टेप का ये फर्स्ट स्टेप है, ठीक है ना. तो इन इस पूरे रिएक्शन का जो रेट है, इस पूरे रिएक्शन का जो रेट है, ओवरऑल रेट है, वो डिपेंड करेगा इन दोनों रिएक्टेंट्स पे भी और इन दोनों रिएक्टेंट्स पे भी. ठीक है, is that clear or not? Yes sir. And there are two more things. What is this? These two powers. Remember बच्चों, these two powers are known as order of reaction, right? These are actually order of reaction. We are going to learn this later on in this chapter, so don't worry about that. So we are going to learn this. You just need to remember this thing over here. These numbers are not the stoichiometric numbers. Just remember this. कि इक्वेशन के अंदर जो स्टोइचियोमेट्रिक नंबर्स दिए होंगे ना आपको, these are not order. ये आपने याद रखना है, these are not order of reaction. ये order of reaction नहीं है, बस आपने ये याद रखना है. ठीक है. And one more thing, when you are going to write the rate of reaction expressions, so remember if you are using catalyst, so the concentration of catalyst are going to be added in the expression as well. So right now over here we have this equation. If you just focus on this equation right now, and this is actually the catalyst over here. तो अगर आप इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन निकालना चाहते हो बच्चों, तो सबसे पहले तो आपको रेट एक्सप्रेशन बनानी होगी. ठीक है ना. रेट एक्सप्रेशन कैसे बनेगी? यू नीड टू से दैट रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? concentration of first reactant and the concentration of second reactant and the concentration of catalyst, right बच्चों? तो रेट ऑफ रिएक्शन concentration of reactants पर भी बेस्ड करता है और कैटलिस्ट की concentration पे भी बेस्ड करता है. ठीक है. concentration of catalyst and the concentration of reactants पर बेस करता है रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक है ना. और उसके ऊपर जो x, y, z हमने लिखा हुआ है, these are actually order of reactions, और ये भी आगे हम इसको पढ़ने वाले हैं कि ये चीज क्या है. ठीक है बच्चों, or not? Okay sir. Then when you remove this proportionality sign, it is going to be is equals to over there with a constant. This is the rate constant. This is what? Rate constant. This is rate constant, right? So remember बच्चों, if you talk about the rate constant, if the value of constant is high, then rate would be high, right? And if the value of rate constant is low, then the rate will be low. And you need to keep remember this: when you increase the temperature, the energy of the particle are going to be increased and the rate of reaction is going to be increased, right? And definitely the value of K will be increased when you increase the temperature. Is that right, Bacho? Yes sir. Any questions? Any queries about these two pages? No sir. Any question, Bacho? Yes, Ahad, Alishwa, is that clear? Manur, is that clear, bete? Okay, then let's move towards the order of reaction. Now you need to understand what is the order of reaction. Now remember, bacho, we just have 3 types of orders. Number 1, D order. Number 2, first order. Number 3, second order. We just have these 3 types of order. Only these 3. इसके अलावा कोई order नहीं है हमारे पास. एक zero order होता है, एक फर्स्ट ऑर्डर होता है और एक
सेकंड ऑर्डर होता है. हमारे पास टोटल 3 ऑर्डर होते हैं, 0, फर्स्ट एंड सेकंड. Right? If you talk about zero order, just look at over here. For example, there is a reaction, reactant 1, or I'm just writing over here, reactant 1 forming product, right? For example, like this. So I am saying that the rate of reaction is directly proportional to the reactant, right? Whatever the reactant, right? If this reactant is zero order, if this reactant is zero order, so in mass, but you know that if anything having a power of 0, it is equals to what? 1. It is equals to 1. So that means the rate is equals to 1. When you remove this proportionality sign, so it is equals to nk. That is showing you that rate is going to be constant. So such reactants that are zero order, ऐसे वो reactants, वो सारे reactants जिनको order कैसा हो, 0 हो, तो वो rate पर कोई असर नहीं करते. For example, अब ये reactant 1 है, अब इसकी concentration कोई असर नहीं करेगी rate of reaction पे. For example, अगर मैं इस reactant को for example मैं double कर दूं, 4 times कर दूं, 8 times कर दूं, मैं 16 times कर दूं इसको, there is no effect on the overall rate. The rate will remain constant. Rate अपने हिसाब से चलता रहेगा, किसी दूसरे रिएक्टेंट के हिसाब से चलता रहेगा, कैटलिस्ट के हिसाब से चलता रहेगा, इंटरमीडिएट के हिसाब से चलता रहेगा, बट इसके चेंज करने से रेट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इज दैट क्लियर बच्चों? सर तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखा हुआ होगा हर रिएक्टेंट के ऊपर, या हमें पता भी करना पड़ेगा? देखें, अब ये डिपेंड करता है, कभी अगर वो आपको लिख कर दे देगा तो फिर आपसे वो फैक्ट पूछेगा कि अगर मैं इसको चेंज करूँ तो क्या होगा, या अगर आपको एक टेबल बना के दे दे जिसमें वो चेंजेस दिखा रहा हो कि आपने इसको इतना चेंज किया तो इतना रेट का फर्क आया, इसको चेंज किया तो फर्क नहीं आया, तो उससे फिर आपको आइडेंटिफाई करना होगा कौन सा रिएक्टेंट कौन से ऑर्डर का है. ठीक है, so this is just a start. Just remember this, we are going to move further in this chapter, so you will learn that what types of questions are asked in this, right? Don't worry. Okay, sir. So second is the first order. For example, is any reaction over there, the reactant is adding over there and the product is forming, so we are simply saying that the rate of this reaction is directly proportional to the concentration of the reactant, and this reactant is, for example, first order. So we know that when the power of any number or anything is 1, so it is actually, that is the substance, right? So it is, rate of reaction is directly proportional to the concentration of reactants. So when we remove proportionality sign, so it is equals to rate constant and the reactants की concentration. So such reactions in which the reactant has the first order, right, ability. So remember बच्चों, ऐसे reactants जिसका order 1 हो, वो रेट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैंने इस वाले रिएक्टेंट को डबल कर दिया, इफ आई डबल दिस, so the rate of the reaction will be double, right? If I thrice this, then the rate of reaction will be thrice. If I just half this, so the rate of reaction will be half. ठीक है बच्चों, तो जितना मैं इसको चेंज करता जाऊंगा उस हिसाब से रेट भी इफेक्ट होता जाएगा. Whatever the value of rate. For example, ये एक रिएक्शन मैंने कराया कि हाइड्रोजन है, वो नाइट्रोजन से मिली, ठीक है ना, और ये बन गया अमोनिया. फॉर एग्जांपल दिस रिएक्शन में आपके पास जो नाइट्रोजन है ना, फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है ना, ये फर्स्ट ऑर्डर है. तो इस रिएक्शन का राइट नाउ जो भी मैंने मास लिया हुआ है, आई डोंट केयर, राइट, इसका रेट फॉर एग्जांपल आ रहा है कितना, 1.6, ठीक है ना, या 1.6 नहीं, मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए, मैं इसको कर देता हूँ, मैं 4 ले लेता हूँ. व्हाटएवर रेट इज 4 मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड, ये इसका रेट आ रहा है. मैंने क्या किया, जो भी इसका मास था नाइट्रोजन का, मैंने उसको कर दिया डबल. क्या कर दिया, मैंने उसको डबल कर दिया. व्हाटएवर द मास आई हैव, 5 ग्राम था, 10 ग्राम था, 16 ग्राम था, या वॉल्यूम था, जो भी था, मैंने उसको डबल कर दिया. देन द रेट वुड बी बच्चों 60, राइट. और फॉर एग्जांपल मैंने इसको हाफ कर दिया, मैंने इसके मास को या वॉल्यूम को क्या कर दिया, हाफ कर दिया. सो यू वुड फाइंड दैट द रेट विल बी हाफ. सो द रेट एंड द रिएक्टेंट्स कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. आप बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगी, डबल बढ़ाएंगे डबल बढ़ जाएगी. इफ यू आर इंक्रीजिंग 4 times, so the rate will be 4 times definitely. If you are doing half of this, so the rate will be half. अगर आप उसको कम करते जाएंगे तो कम होता जाएगा, बढ़ाते जाएंगे तो बढ़ता जाएगा. Is that clear बच्चों? सर 4 का डबल 8 नहीं होगा? नहीं, डबल कर रहे हैं ना,
हाँ सही, डबल होगा, सॉरी आई एम रियली सॉरी, इट इज 8, दैट्स गुड, मैंने उसको स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर वाला सेकंड है। सेकंड ऑर्डर, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई रिएक्टेंट है या कोई रेट है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन ऐसे रिएक्टेंट पर डिपेंड कर रही है, ऐसे रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रही है जिसका सेकंड ऑर्डर है, ठीक है ना, तो इट इज स्क्वायर, ठीक है ना। तो अगर आप इसको चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल आप इसको 2 से 4 करते हैं, अगर आप इसको 2 से 4 करते हैं, तो अगर इसका रेट 4 होता तो इसका स्क्वायर हो जाता, ठीक है ना, इसका आंसर कितना आता 6 होता। तो अगर आप इसको डबल करते हैं तो ये क्वाड्रपल हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है बच्चों, दिस इज द स्क्वायर, और यहाँ पर आप जो करेंगे एज इट इज होगा। सो यू आर राइट, अगर आप इसको 2 से 4 करते हो, डबल करते हो, तो ये 4 से डबल होकर 8 हो जाएगा। अगर आप इसको 4 से 8 करते हो, डबल करते हो, तो ये 8 से डबल होकर 16 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। थैंक यू सबात, यू आर राइट, मैंने उसको गलती से स्क्वायर कर दिया, ठीक है बच्चों, इज दैट क्लियर? Yes, sir. So this is the case that you need to understand. For example, if I have an example over here, this is the example. You can see this. This is saying that you have a rate of reaction, and the concentration of A is second order, and the reactant 2 is actually 0 order, and the reactant C is first order. So if you double the concentration of A, then definitely आपके पास जो rate होगा वो quadruple हो जाएगा, यानी कि square of 2. So it will be quadruple, right? And if you double the concentration of B, definitely it is 0 order, so there is no change. So if you double the concentration of this, it will be constant, right? And if you double the concentration of C, so अगर आप इसको double कर रहे हो, so the rate will be double. Is that clear, बच्चों? Yes, sir. Any problems to any one of you in these 2 pages? Okay, so I am just finishing this over here, क्योंकि इसके बाद जो चीज आने वाली है बिल्कुल नई चीज है, और वो चीज हम 5 मिनट में नहीं कर सकते हैं। So अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है जो कि आपको पूछनी है, so you can